अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज़ आ सलाम। रही यस सर। आप लोग को? ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। सो आप अगर अपने गूगल क्लासरूम में आ जाएं और क्लास वर्क सेक्शन में देख लें। यहाँ पे एक तो जो बुक है वो मौजूद है, साथ में सोल्यूशन मैनुअल उसका मौजूद है। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। ओके, सो लेक्चर नंबर 1 2 जो हमने लिया था, ठीक है, उसके स्लाइड्स यहाँ पे मौजूद हैं। देन आज जो लेक्चर नंबर 3 लेंगे और जो लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, दोनों इस वीक के लिए है। तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। मैं अगर ये ओपन कर दूं तो आप यहाँ से इजीली देख भी सकते हैं। ये क्लास आज हमने फॉलो करनी है। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड इट, सो यहाँ से ओपन इन न्यू विंडो कर दे तो आपके पास डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जो कि हमने प्रीवियस वीक में जो दो क्लासेस ली थी, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मौजूद है। So if you click on it, you'll be able to see the video. तो स्लाइड्स भी मौजूद हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो रिवीजन के लिए, अगर किसी से लेक्चर वगैरह इन बिटवीन कहीं पे एक आध पार्ट मिस हो गया, तो यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है वो भी कोशिश करेंगे कि स्लाइड्स तो मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है तो वो भी साथ में इंशाल्लाह यहाँ पे फिर पोस्ट कर देंगे। ओके, सो स्क्रीन शेयरिंग मोड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, होपफुल स्क्रीन आपको अभी नजर आ रही होगी। यस सर। जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई लेट ज्वाइन कर लेता है या कहीं और बिजी है, सो ही कैन देन टेक हेल्प फ्रॉम द वीडियो रिकॉर्डिंग और फ्रॉम द स्लाइड्स। ओके सर। Okay, so in our previous class, we discussed what is mechanics and what are the different types of mechanics. So we discussed two different categories of mechanics. One was statics and another one was dynamics. In dynamics, then there were kinetics and kinematics. Then we discussed particle, we discussed body, and then the basic concept that can be utilized in mechanics. The basic units that can be used in mechanics are in engineering statics. We studied vectors, vector addition, and then how we can add them. So the different techniques like head to tail rule and parallelogram law, we did number of problems on it, and I also gave you some of them as your home assignment. So in today's class, what we are going to do, we are going to discuss force systems. Means, for example, if you want to analyze a system, if you want to do its force analysis, so how we can study those force system.
as shown over here. For example, we are having this bridge, this is having this structure, and this structure is basically supporting this bridge with the help of these wires or cables. So if I magnify this view, so you can see over here, these are wires, and it is giving support to this structure, and this structure is further giving support to this bridge. So each of the cable is having tension in it. Now, if you want to calculate this tension, or if you want to design this cable, so you must know the amount of external force that would act on this cable. So that's why it's very much necessary, means for proper design, you need to do force analysis. If you are having 1,000 forces, so you cannot consider each of them separately. But what you can do, you can consider all these forces, or you can consider their net effect. Okay, so let's continue with force system. For example, if you are having this system, consider this bar. Now, if I apply an external force F or external force P on this bar, so here it is connected with this support, or with this bracket, or with this foundation. So when I apply force on it, the force will try to pull it in this direction, whereas this support or this bracket, it will not allow this object to move in this direction, or in other words, it will apply a reactive force on this object in the opposite direction. So the external forces applied on this object, one will be basically the force that we are applying from the outside, and the other one will be the force, other one will be basically the reactive force that is applied on this bar uh, from the structure, from the supporting structure. It can be like the foundation, or it can be the bracket, or it can be bolt, or from any place. Okay. uh, So let's see. As we know that force is a vector, it can be represented as a vector, and we know that force have both magnitude as well as direction. And in case of force, the points of application also plays like a vital role. So magnitude, direction, and point of application. So by considering the point of application, we can say that whether the vector is a fixed vector by looking at the scenario, or we can decide that whether it's a sliding vector. Sliding vector means it can change point of application along the line of action of force. Okay, so the external effect on this object, it is the external load that we have applied, the applied force, let's say it's a P, and then the reactive forces that is applied on this object. So the reactive forces can be due to the forces exerted by the bracket, bolt, foundation, or any external structure. So since in mechanics we basically consider rigid bodies, and in rigid body we say that there is no deformation. So if there is no deformation, this means the internal stresses are the internal forces generated within the material, they are basically neglected. They are not significant in these cases. So in this case, we will be having the external forces only. The external forces being the force that we apply, and the external reactive forces from the support structure. But there will be no internal forces generated within the system. Okay. So if you look at this system, the force that we have applied is neither horizontal nor vertical. So if the force is horizontal, so we will say it will be the net effect will be in horizontal direction. If we consider this force in vertical direction, so the net effect will be in the vertical direction. Or in simple word, we can say for our convention that the net effect will be in x or in y direction. But if the force is in some other orientation, so it may have its effect in more than one direction. So let's study those things. Okay, so the force system, it can be like a planar force system, or it can be a force system in the space. Space means three-dimensional force system. So in start, we will consider only the force system in 2D or two-dimensional force system. Means if we are having a force, it is inclined at certain angle, so it will be, we will assume that it will be having component in two axes only. The third axis for time being we are not considering it. We are considering planar forces. So two-dimensional force system. For example, if we have a force, and imagine we are having some coordinate system. The coordinate system is, let's say, the Cartesian coordinates, in which we have x, y,
since there is no 3D third dimension, so the Z component will be missing in this case. So the axis that we are using, it is X axis and Y axis. You can change the name like the A axis, B axis, something like this. Okay, so imagine we have a force that is neither parallel to the X axis nor to the Y axis. Rather than it is making an angle theta with this positive axis, and definitely it will be having some angle with the Y axis. So this means this force or the effect produced by this force, it will be having some effect in the X as well as in the Y, or the net effect is in between these two. So if I want to analyze this force system, so what I can do, I will find out its effect in the X direction as well as in the Y direction. So the net effect of force, it will be combination of effect in X direction and its effect in the Y direction. What are basically these Fx and Fy? So they are basically the component of force along X direction and along Y direction. So means we are having force F, it is inclined at certain angle or in between the xy, or we can say it is an xy plane. So it will be having component in X direction and will be having component in Y direction. So that's why what we say Fx and Fy are basically vector components of force F in the X and Y direction, scalar components. Fx and Fy are the vector component of F in the X and Y direction. Okay, since we have shown it as means in bold letter, so this will represent the vector form. If you want to represent it in scalar form, so what you can do, you can represent it with non-bold letter. Or what we can do, we can represent the component in scalar form along with direction. So the magnitude will be different and the direction will be different. In other words, the vector component can be written as magnitude along with unit vector. We already know that unit vector basically represent the direction. So the same can be written in terms of unit vector as F, it is capital, so it's showing vector. And then you see this Fx, this is not capital, so this is showing magnitude of force Fx. Or this is basically showing the scalar form of Fx, which was basically vector component. And Fy, again, this is basically showing the magnitude of Fy. But this is the magnitude in which direction? Magnitude of component along x-axis or okay, and this is the magnitude of component along y-axis. Okay, so this j is this j is basically showing direction. This I is also showing direction. So we can say this I is the unit vector along x-axis and j is the unit vector along y-axis. Okay, so this whole can be treated as a vector because we are having magnitude with unit vector. Okay, if you want to further calculate that what is Fx, how to calculate this magnitude. So we have this force and you want to calculate this component, so take cos of this angle, so you will get Fx. So Fx can be equal to F and angle is theta, so it can be equal to F cos theta. Since over here we don't have any angle, and if you want to use this angle, so this component Fy, it will become F sine theta. So Fx is equal to F cos theta, Fy is equal to F sine theta. And we already know if you want to find out the magnitude, so it's very much simple. F is equal to Fx square plus Fy square and its square root. And if you want to find out the direction of this resultant vector F, so how we can find out? This can be find out with the help of theta. This theta will give the angle which it makes with the positive x-axis. So from here we can identify if the angle is 90, so this means direction will be in y. If the angle is in between 150 and 90 and 180, so direction will be like this. So how to find out that angle? It is very much simple. As tangent theta is equal to perpendicular by base Fy by Fx, so theta will be equal to tangent inverse Fy by Fx. So this is how we can find out the rectangular component of force if it is inclined at a certain angle. Hopefully यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. If you are having any question in between the lecture, you can turn on your mic and you can ask me question.
सर जी जी सर ये एंगल अगर हमारे पास एफ वाई नॉन एंगल जो है हम्म एफ वाई की तरफ हो तो फिर हमारे पास एफ वाई एफ cos थीटा के बराबर होगा। जी बिल्कुल, वेरी गुड। ये काफी अच्छा और बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और हर जगह पे ये यस एप्लीकेबल होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये एंगल हो तो फिर इस कंपोनेंट के साथ कॉस आएगा, ठीक है। तो साइन सर और कहेंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, एफ वाई, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है, उसको हम नाम दे दें अल्फा, और इसको नाम दे दें थीटा, तो एफ वाई किस चीज के बराबर होगा? एफ वाई बराबर होगा एफ साइन थीटा, और एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा। यस समझ आ सर रही नहीं यार, या रिपीट कर दूं? यस सर। नहीं सही है सर, आगे सब। ठीक है, ओके। सो ये बड़ा ही बेसिक चीज है, और अगर ऐसी चीजों में आपको कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ लिया करें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसी छोटी गलती कर देते, पूरा प्रॉब्लम खराब हो जाता है। सो इट्स वेरी गुड कि आप पहले से पूछ लें। ओके, नाउ we have studied the graphical method and the algebraic method in head to tail rule. We have also studied, means we just discussed that head to tail rule in our previous week lectures. Now we have another method for vector addition, and that vector addition method is known as vector addition through rectangular component. For example, if we are having a number of vectors, we are having more than one vector, that can be 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we can also add them through their rectangular components. How we can do it? In the very first step, we will divide the vector into its component. For example, over here we are having three vectors, f1, f2, and f3. So what we will do, we will divide it into their components. We will write this vector in terms of its vector. So for example, this is f1. So it will be having two, since we are studying two-dimensional force system, it will be having two component, one along x, one along y. So x component of f1 and y component of f1. To show the direction, we have to use the unit vector with it. Similarly, we can write f2 like this. So x will be negative, y will be positive, and f3, x will be positive, y will be negative. So we have written all these three in their component form. Now, if I want to add all these three, so it's very much simple. F will be equal to, or the resultant force Fr will be equal to F1 plus F2 plus F3. Replace F1, F2 and F3 by their form on the right side. जो right side पे हमारे पास जिस form में ये है, or rewrite it in vector in their component forms. So F1x I plus F1y j, similarly for F2, similar for F3. Okay, now combine all x component. So x component, this is I, this is I, this is I. So combine it, take I as common. So what we get? F1x minus F2x plus F3x. Similarly for y. Okay, and over here we are having unit vector along x-axis and unit vector along y-axis. When you combine, so what is this basically? This is basically summation of x component of all vectors. जितने भी वेक्टर्स हैं उनके x कंपोनेंट को हमने सम अप कर दिया. So when you combine it, what we will get? We will get the x component of resultant vector. And when you combine all these components along y-axis, so we basically get the y component of resultant vector. So x component will be represented by I, and the y component will be represented, means the direction will be represented by unit vector j. Okay, so we can say this frx, if I want to write it in scalar form, so I will remove this I. It will be f1x minus f2x plus f3x, means summation of all components in x direction, and for y, summation of all components in y direction. Okay, so we can also see that frx, or the x component of resultant vector, it is basically the summation of x component of all vectors, a summation of all components in x direction. Fry is basically summation of all components in y direction. Now to find out the magnitude of resultant, so what we can do, we can use this equation again. In the resultant vector is equal to the square of x component of force, resultant force, and square of y component of resultant force. Add them and then take the square root. So Fr is equal to Frx square
plus f or y square and its square root. So you will get the magnitude of the resultant vector. Similarly, if you want to find out the direction, so direction again it will be perpendicular by base or f r y by f r x, that is equal to tangent theta, and to find out the theta, take tangent to the other side. So the theta will be tangent inverse f r y by f r x. So this is the method by which we can add a number of vectors, 2, 3, 4, 5, 6, doesn't matter how many vectors do we have, we can add. And the method is known as addition through rectangular component, because what we do, we basically divide the vectors into its rectangular component into their rectangular components, and then by using those rectangular components we do that vector addition. Okay, now in some cases like we realize, we understand that how to find out the components. So sometimes word projection is used. So if the word projection is used, how we can find out that projection, or how you can find out those components. So for example, as one of the question has been asked by Majid Ahmed, we are having this force F, and I want to find out component of these forces. So definitely we are having two axes, X and Y. So this will be having component along X and component along Y. So now the angle is beta. So if I want to find out the component of force along x-axis, so the fx will be what? Anyone Cos want to theta. answer? Fx will be Ji Jawad. Sin beta. Okay, Jawad just said that it will be cos theta, but it will be sin theta. Why sin theta? सर ये जो एंगल को सामने कंपोनेंट होता है ना सर, एंगल जहाँ भी गिवन हो, जी तो जहां ये ऑलवेज भी इसके सामने जो भी कंपोनेंट हो वो साइन के साथ होता है। अब ये वाई एक्सिस के साथ गिवन है एंगल, तो इसके सामने जो है वो मतलब एफ साइन बीटा आएगा, फिर एफ एक्स जो आएगा सर। ठीक है। अच्छा, अगर जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है वो उस एक्सिस के साथ कॉज आएगा, तो यहाँ पे एंगल गिवन है, इसके साथ कॉज आएगा, ऑपोजिट पे साइन आएगा. So means we don't have angle over here. If you want to use this angle, so fx will be equal to f sine beta, and fx will be fy will be equal to f cos beta. F cos beta. Very good. Okay. Now similarly over here, angle is given over here. If we want to find out the component of f along x and component of f along y, so in this case fx will be, fx क्या होगा? माइनस एफ कॉस बीटा होगा। why minus? सर डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, ओके, x के ऑपोजिट है. So one thing you need to understand here, यहाँ पे देखिए x y इन्होंने कैसे किया, x इस डायरेक्शन में, y इस डायरेक्शन में assume किया. So it's up to you. Once you define the coordinate axis in a problem, then you have to follow it. So it can be horizontal and vertical. It can be inclined at certain angle. So it's up to you. The coordinates that you define, then you need to follow it. Okay. अच्छा, फिर यहाँ पे अगर आप देख लें, for example, if we have force F and if I want to find out the projection of force F on x-axis. Projection आपने drawing में पढ़ी है कि projection क्या होती है? If I draw a perpendicular line from here till this axis, projection perpendicular होती है ना, orthogonal projection जिस तरह हमारे पास होती है. Yes sir. ठीक है? Yes sir. तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं perpendicular draw करूं, तो ये जो line होगी, this will be projection of F on this axis. In other words, if someone asks you to find out projection of F on this x-axis, so आप क्या कर सकते हैं? What you can do, you just simply find out the component of this force along that axis. अगर x पे प्रोजेक्शन चाहते हैं तो आप x पे इसका कंपोनेंट निकाल लें, अगर y पे चाहते हैं तो आप y पे इसका कंपोनेंट निकाल लें. ठीक है? तो x पे अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो वो क्या होगा? दैट विल बी f cos बीटा, एंड जी बिल्कुल एग्जैक्टली fx. एंड डायरेक्शन शो करने के लिए आप प्लस या माइनस पुट कर सकते हैं. तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि आपने किस किस्म की कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट किए हुए हैं. ओके, लेट्स मूव अहेड. अभी यहाँ पे देख लें, वी आर हैविंग x एक्सिस here and y axis here.
this force F is making an angle of how much with y-axis? Y-axis के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? भाई सर 180 minus beta. 180 minus beta. अगर if you want to consider this angle, so it is making an angle of 180 minus beta. 180 is also equal to pi. ठीक है? So in other words, this is pi minus beta. So if you want to find out Fy component, so Fy component direction will be opposite, right? Y के against होगा ना? Yes. Yes, sir. yes sir Okay. So Fy will be equal to minus F, and the angle will be cos. And what is the angle? Pi minus beta. So Fy is equal to minus F cos, and this is the angle pi minus beta. Similarly, the x component, which will be here, and if you want to use this angle, so we need to use sine with it. So F sine pi minus beta, and direction will be this. So x is positive in this, so no need to put negative. Okay. Now you consider this one. If I want to find out the component of this force along x-axis, or the projection of this force on x-axis and on y-axis, so how can I do it? Now you see, this is F, this is x, and this is y. This angle is beta, this angle is alpha. Okay. You see, if I draw a horizontal line over here, इसको जरा समझ लें, ठीक है? So the angle between this horizontal line and this, ये कितना होगा? Sir, question please repeat कर दो. Okay. If I draw a horizontal line over here, ठीक है? So the angle between this line and this horizontal line, वो कितना होगा? Alpha beta. Beta minus alpha. Beta minus alpha. Okay. Just beta. So, okay, let's see. This is the line. I draw perpendicular. I draw a horizontal line. So ये angle कितना है? beta Okay. Beta. This is same line. This is same line. Again, I am drawing a horizontal line. So ये angle कितना होगा? Alpha beta. Same angle होगा. Beta होगा. Beta. Yes, ठीक है? Okay. So the angle between horizontal and this line is beta. If I want to find out the angle between F and horizontal, the angle between F and horizontal, वो कितना होगा? Beta Beta minus सही alpha. निकाल Beta लें. minus alpha. Beta minus alpha. Okay. So the component of F along x, it will be Fx or F cos of angle, and cos Beta of minus angle क्या होगा? Beta minus alpha. Similarly, Yes. with y, it will be sine beta minus alpha. Is it clear? So sometimes you need to analyze angle in this way. आपने क्या करना होता है? The best way is to make a free body diagram. Once you make a free body diagram, so चीजें काफी ज्यादा आपको clear हो जाती. If I draw a line over here and I draw this line, so I will observe that it's similar to this one. So it becomes very much easy. So that's why you need to draw so many diagrams in your static course. Okay, then let's come towards the example. What they are saying, find the x and y scalar components of f1, f2, f3 acting at point A on the bracket. This is point A, right? And this is force f1. Okay, this is very much simple. Like the angle is given and force is given. So x, you see, this is x-axis, this is y-axis. So x component will be simply f cos theta, f1 cos theta, and y will be f sin theta. yes sir Okay. Now let's come toward this one. X and y component, fx will be negative, fy will be positive. We have force, but we don't have this angle, right? okay sir So can we find out this angle? Yes, sir. Yes sir. 3 4 5 triangle है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं. base root of ठीक है. Okay, okay. Let's see. If I want to find out f cos theta, f cos theta. So what would be cos theta value? Cos theta value will be, means for example, cos theta is based by hypotenuse. How much will be the hypotenuse here? If I use Pythagoras theorem, 5. 4 square plus 3 square, so it will become 25. Yes, 5. Yes. So cos theta is based by hypotenuse 4 by 5. So 500 into 4 by 5, right? yes sir Okay.
You can do it this way, or you can Yes, just sir. find out the angle and put angle in your equation. So that is also an easy way. Okay, now let's come towards this one. These two have been solved. We have this one, and force is 800 Newton, but we don't have the angle. So from here till this point and this point, this can be like a right angle triangle. बन जाएगा ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so can we determine this distance from Yes, sir. point A to B? Yes, sir. कितना होगा ये distance? 0.4. 0.4. How you identify that distance? 0.3 0.2 plus 0.1. minus. Okay, so this is 0.1. And how much is this distance? 0.2. How? This is 0.4 0.4. How? half. It's half of 0.4 minus 0.2. Okay, so now we have this distance and we have this distance. Can I find out this angle? Yes, sir. Yes, sir. Tangent. Okay. Or if I found this angle, then it's very much easy to find this component as well as this component, right? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, so this is the first one for F1, angle is 35. This is for F2, the angle is this one. So you can either find out the angle, or with cos it will be 4 by 5. So you can see F2x is equal to 500 4 by 5, and with F2y it will be sine theta, or instead of sine theta you can put 3 by 5, right? Okay, let's say this angle is alpha. This angle is alpha. So how we can find out this angle alpha? As you just identified that this is 0.4, this is 0.2. So we can simply find it by using tangent alpha. It will be equal to perpendicular by base 0.4, perpendicular by base, sorry, 0.2 by 0.4. This is 0.4, this is 0.2. So tangent alpha is equal to 0.2 by divided by 0.4. And if you want to take tangent here, so alpha is equal to tangent inverse 0.2 divided by 0.4, and this angle will come out. Okay, now F3x, F3y, you can easily find out. F3x will be positive, F3y will be negative. So these are the components. Is it clear? Yes, sir. Okay, you can also find it out in terms of unit vector. So we know that vector is equal to magnitude multiplied by its direction. Vector is combination of two things, that is magnitude along with the direction, or instead of direction we can put the unit vector. And what is unit vector? Unit vector is basically vector divided by its magnitude. So we can also find out this F3 by this way, like magnitude into unit vector. So vector divided by its magnitude. So vector AB, how we can find out this vector AB? That is 0.2 in x direction, 0.4 in y direction. So 0.2 I plus 0.2 I, this will be plus minus 0.4 j. This will be the unit vector, or we can say the vector component of unit vector. So this AB, if I want to write down it in its component, so it can be 0.2 I minus 0.4 j. So 0.2 I minus 0.4 j. What about magnitude? Take this component square, take this component square, add करें and take its square. So vector divided by its magnitude. This F3 is already given. Put it over here, and when you multiply it inside, so 358, 716, these are basically the components in x direction, component y direction. So you see this is the same, this one and this one. So whenever some question is given to it, so you need to apply the method that seems very much easy to you, जो आपके लिए सबसे आसान हो. So any method that is easier for you, you need to apply that method. Unless if someone asks you to use this method, so आप free हैं कि आप कोई भी method use कर लें. अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये method use करें, so then in that case you have to follow the specific method. Otherwise you can use any method for your calculation. Okay. Now let's check another sample problem 2-2. We have the two forces P and T. Combine the two forces P and T which act on the fixed structure at B at this point into a single equivalent force R. Is just simple a case of vector addition.
So as per parallelogram law, if you have two forces, how we can add them? What will be the first step? Draw a parallelogram. Draw a parallelogram. How? Connect the tails of both of the vectors together. Okay, exactly. Very good. So connect the tails. So we connected the tails, right? And then draw parallel line to this one and parallel line to this one, and this will be the resultant vector. Sir, G. G Majid. Okay, no, sir. Majid. Acha. So this is basically the resultant. Now, if I want to do graphical method, so I will assume that, let's say, 200 Newton is equal to 1 centimeter. So this line will become 4 centimeter and this line will become 3 centimeter. But this one is easy. I will just draw a horizontal line. But how can I draw this line? If I have compass and if I have this angle, then I can draw this line inclined like this one. But if I don't have Yes, sir. if I don't have this angle, then it will be difficult for me to draw this line. So I need to find out this angle alpha, right? If I get this angle and then I draw it, so just simply with the help of ruler, I will find out this length and also this angle. This will give us the direction as well as the magnitude of resultant vector. Okay, so from this diagram, look at this diagram. What is the value of this? This is 600 Newton. How much will be the value of this component? 6 multiplied by sine alpha. Why sine alpha? That's This is cos 800, so same 800. 800, 800, sir. Okay, so this is 600, this is 600, this is 800, this is 800. Now this is 800, this is 600, right? Yes, sir. Okay, let's come back towards this diagram. First we need to find out this angle alpha. You see, this is a right angle triangle, right? This is the right Yes. angle triangle. I want to find out this Yes, sir. angle alpha. If I get this distance and this distance, then we will be in a position to find out this alpha, right? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so under current condition, I cannot find out this distance and this distance. What I have, I just have this 3 meter. Okay, but look at this one. We have another right angle triangle. Do we have Yes, in sir. this diagram? Okay, so can I find out this distance? Yes, sir. How? Sin theta? हाइपोटेन्यूज भी Yeah. गिवन है और सी के साथ भी एंगल गिवन है sir. Okay, so what I can do, I mean, sine of 60, it will be equal to perpendicular by hypotenuse. So perpendicular will become equal to hypotenuse into sine of 60. So this distance, this will become equal to 6 sine of 60 degree, 60. right? Yes, sir. 6 sine of 60. What about this one? Sir, it will be 3 Actually, plus find by 6 cos cos 60. theta. No, what about this one? CD. 6 CD. cos of 60. 6 cos 60 degree, sir. Yes, it will be 6 cos 60, right? Yes, 60 degree. Yes, sir. Okay, so now we have complete x component, complete y component. So can we find out this So- angle alpha? Yes, sir. Yes, Okay, sir. what will be the x component? 3 plus 6 Yes, 6 cos of cos 60. degree. Okay, so you see tangent alpha perpendicular by base, so base is 3 plus 6 cos of 60. What about vertical? 6 sine of 60, right? So Yes, this is alpha. So when we do it graphically, we can use this angle 40.9. So this will be used now for further question. So when you do it graphically, you calculate this R, whatever answer you get, you use your conversion that you assume initially,
जो भी स्केल आपने ज्यूम किया था उसको दोबारा यूज करके r की वैल्यू आ जाएगी. Find the angle of this r with horizontal axis and you will get that angle. So this is graphical method. Now you can use algebraic method or geometric solution. Means how? You have this angle, right? Do you have this angle? Yes, sir. Yes, sir. 40.9. Okay. Okay, and you have this 600 and this how much? 800. You want to find out r. What you want? You want to find out r. So can you find it out by using any of the law? Yes, sir. कौन सा law use करेंगे? Cosine law. Cosine law. So this square plus this square minus 2 into this and cos of angle opposite to it. So this square plus this square minus 2a into b into cos of angle opposite to this one. Right? Yes, sir. अच्छा ये तो आ गया. अभी देखें ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे. ये जो एंगल है Yes, sir. और ये जो Opposite angle. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये भी अल्फा एंगल होगा. ठीक है. So I have alpha, I have now this as 800, this as 600 और R भी मेरे पास आ गया. R भी आ गया ना? Yes, sir. 5 to 4. Can I find out this angle? Yes, sir. Yes, Yes, by sir. sine law. By sine law. Okay. So 600 divided by sine of theta and this component, like for example 524 divided by sine of alpha. Okay, from here I can find out sine theta and from there I can find out the theta angle itself. Is it clear? Yes, sir. So I can find out the required result by using both of the methods. Okay, and we can also do it algebraically. Algebraically, how we can do it? I mean, find out the component of this force in x and y. So it is already in x. It is having no component in y direction. So 800 will be having only one component and that is in x direction. But this force, the other force, this one, you see, it will be having two components, one in x, one in y. But for xy component, you need its angle with x-axis. So this is this angle and this angle will be same, right? This one. Yes, sir. Opposite angle. Okay. Okay. So this will be cos, this will be sine, and both will be negative. Right? Yes, sir. Okay. So you see, you find out both the components, means the x component as well as the y component, add all component in x direction, all component in y direction, find out these components, find the magnitude of resultant and the angle. So you will get the required result. So by all three methods, we get the same answer. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And since you are having both x and y components, so you can write down it in terms of vector form, or you can write down the vector in terms of unit vector, I and j. Okay, this is another sample problem 2/3. So आप इसको खुद कर लें. You try to do it by yourself. It's already given. Okay, sir. Okay. Now the sample problem 2-4. What is given over here? We are having force F1 and F2. What you need to find out, determine the projection of the resultant on the b-axis. Means we are having these two forces. Add them. When you add them, find the resultant. Once the resultant is obtained, what you need to do, you need to find the projection of resultant on b-axis. Is it clear? We need to find out the projection of resultant on the b-axis. Okay, so let's see. This is force F1, this is force F2. So how can I add it? कैसे add कर सकते हैं? Parallelogram. Parallelograms. Okay, okay. Draw parallel line with this to this one and parallel line to this one and this one, and drawing this diagonal or draw a diagonal. This is basically the resultant, right? This angle is 20, this angle is 30. So the total angle will become how much? Total angle will become 20 plus 30? 50, right? Okay. So this is 50,
This means this angle is how much? 50. 50. Okay. What about the whole angle within the parallelogram? Total angle 30 degrees sir. 360. 360. अच्छा 360 में से 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे निकल गया, कितना रह गया? 250. 260. 260. This means 260 का हाफ यहाँ पे होगा और हाफ यहाँ पे होगा. Yes, sir. Right? 30 man. Okay. So means this is 130, this is 130, this is 100, this is 100 Newton, right? And this is how much? This is 80 Newton. Okay. Yes, sir. So we have this, and we also have this angle, which is 130. Can I find out this R? Yes sir, by cosine. Yes, sir. By cosine law. So simply by cosine law, I have found out this thing R. So now I have this R magnitude, which is 163.4 Newton. Now what they are asking, they are basically asking me to find out the projection of R on B axis, Yes. right? Okay. So the projection of R on B axis, and we know that projection is always orthogonal. So just draw a perpendicular line over here, and this whole line will be the projection of R on this B axis. So this is already given. You see, this 80 Newton is already given. If by any means, if we find out this thing and add these two, so this will be the projection, right? Yes sir. Okay. So let's say you draw this line and this line. So the angle between this line and this line is how much? 50? 50. 50. So same will be 50 here. Okay. And how much is the magnitude of this line or this force? 100. 100. So this is can I find out this component? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. How? It will be equal to what? 100. Yes, sir. 100 cos of 50, right? Yes, sir. So 100 cos of 50 plus 80, this will be the required answer. So projection of R on B will be FB, which is equal to 80 plus 100 cos of 50. And this is your required answer. Yes, sir. Okay. Now, let's move towards the exercise problem. So the line of action of 9.6 kilonewton force F runs through point A and B as shown in the figure. Determine the X and Y scalar component of F. We have this F force, which is 9.6 kilonewton. We need to find out its X component and its Y component. So the X component, if we get this angle, so X component will be simply F cos theta and Y will be simply F sin theta, right? Yes, sir. Okay. So if I get this angle, this Yes, distance sir. and this distance, so क्या मैं एंगल फिर फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए? Yes sir. Yes, sir. Okay. So how can I get this distance? So you see, this distance is x. So इस पॉइंट का जो x है वो सेम रहेगा. So means x2 minus x1 will give me x, and y2 minus y1 will give me this y distance. So x2 is 300, x1 is minus 150. So 300 minus 150, it will become how much? 450. 450. And similarly y2 minus y1. So I have written over here, right? So now perpendicular by base से आप angle निकाल सकते हैं 30 by 45. So you can get this 33.7. And when you get this, so fx is equal to f cos theta, fy is equal to f sin theta. By using this equation, you can find out the required result, right? Yes sir. Yes, sir. So these problems are just to build your concept. Okay, now what they are saying, a cable stretch between the fixed support A and B के दरमियान एक केबल स्ट्रेच की गई है, is under tension T of 900 Newton. How much is the tension within this cable? 900 Newton. 900 Newton. Okay, express tension as a vector using the unit vectors I and J. First as a force TA acting on A, and second as a force TB acting on B. Okay, so tension in this cable is 900 Newton, and since this system is
in equilibrium. So this means it is in state of rest. This point A means this point is applying a force on this cable. I mean, it is trying to pull this cable with a tension of 900 Newton. And similarly, this cable is also pulling it towards itself with a 900 Newton. So what they are saying? Express the tension. T and TV. Okay, what they are saying? Express the tension as a vector using I and J. First, as a force TA acting on A. TA acting on A. So this means this force acting on A, टेंसाइल फोर्स, तो डायरेक्शन ये होगी, समझ आ रही है, ये TA हो जाएगी. एंड देन फोर्स TB एक्टिंग ऑन B. सो यहाँ की जानिब से फिर क्या होगा, ये फोर्स हो जाएगी आपके पास. तो ये मैंने देखी यहाँ पे शो कर दिया. अच्छा, दिस इज 900 न्यूटन, यहाँ पे 900 LB लिखा हुआ है, ठीक है, बट दिस इज बेसिकली न्यूटन. यू कैन चेंज इट. ओके, सो फोर्स लिखना तो आसान है, इसका बस x कंपोनेंट निकाले और y कंपोनेंट निकाल लें. सो देखिए यहाँ पे, इफ फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, right, so x component will be positive and y component will be negative. Okay, so TA will be, x component will be positive, y component will be negative. What about B? In case of B, x component will be negative and y component will be positive. Okay, but how I can find out this x and y component? For that I need angle. I need this angle or this angle. Can I find out this angle? Yes, sir. Okay, how can we find it? Tangent inverse 2/3. ठीक है. Okay, so this is perpendicular and this is base. So tangent inverse 2/3. From here we will find out the angle. Once we get this angle, then we can find out the cos theta as well as the sin theta. So 900 cos of theta will give us x component and 900 sin of theta will give us the y component, right? So this is 900 Newton and sin theta will give us this, cos theta will give. So TA is basically 900 cos of angle, जो भी angle यहाँ से हमारे पास आ जाता है, that will give us 749, and then 900 sin of that angle which we get from there, it will give us 499. So this is TA. So इसमें क्या है, x positive है और y negative है. And what about TB? TB will be opposite to TA. So इसमें x negative होगा और y positive आपके पास हो. Is it clear? Yes, sir. एंगल की समझ नहीं है? No, sir. ये यहाँ किस तरह की है? sin theta का. ओके, यहाँ पे देखिए. ओके, इधर देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, या यहाँ पे देखिए, चलें, ये एंगल मैं निकालना चाहता हूँ, ये ठीक है. Yes, sir. अच्छा, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. Yes, sir. हाइपोटेन्यूज मैं निकाल सकता हूँ इसकी लेंथ. Yes, sir. कैसे? Tangent sir. Tangent. Pythagoras theorem. एंगल तो है ही नहीं, पिथागोरस थ्योरम से करेंगे. 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है. Yes, sir. Pythagoras. ओके, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ये हो जाएगा. अभी साइन थीटा किस चीज के बराबर होगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. Hypotenuse. Yes. परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हाइपोटेन्यूज. cos थीटा क्या होगा, 3 बाय हाइपोटेन्यूज. सही है. Okay, sir. सो x कंपोनेंट क्या होगा, 900 इनटू cos ऑफ थीटा. y कंपोनेंट क्या होगा, 900 इनटू sin ऑफ थीटा. Yes, sir. Sin theta. Yes. ओके, Okay, sir. आगे मूव करें. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इट्स वेरी मच इजी. आप इसको आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है. ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, अलजेब्रिक से भी कर सकते हैं. ये वेक्टर है, ठीक है. इन दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दें और इसको सॉल्व करें. इट्स ऑलरेडी गिवन, आप इसको खुद देख लें. ओके, माजिद माइक ऑफ कर दें. नाउ यू सी,
The T component of force F is known to be 75 Newton. Determine the N component and magnitude of F. We have this force F, and this is axis is T, this axis is N. Okay. ये जो force है, it is making an angle of 10 degree with the horizontal axis, and this T axis is making an angle of 30 degree with horizontal axis. What we need to do, Ft is given. Ft is how much? It is 75. And what we need to find out? We need to find out Fn. And we also need to find out the magnitude of F. So देखें, see, if you try to directly solve this problem, or if you look at this problem, so देखने से it's almost seem impossible. बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या कर रही है, तो अजीब व गरीब तरीके से एंगल दिए गए. सो सिंपली अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं? देखें, ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन, आल्सो ड्रा अ वर्टिकल लाइन. अगर वर्टिकल लाइन ड्रा भी नहीं करते तो साथ में ये टी और एन एक्सिस भी ड्रा कर दे. सो मैंने क्या किया, वी ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वी ड्रा दिस टी एक्सिस. टी एक्सिस और हॉरिजॉन्टल के दरमियान एंगल कितना होगा? कितना होगा ये एंगल? 30. ये देखिए, ये 30 किसके दरमियान? टी और हॉरिजॉन्टल. ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी. ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 है, यहाँ पे भी ये 30 होगा ना, राइट? बिल्कुल सर. अच्छा, टी के साथ एन है, नॉर्मल और टेंजेंट, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने ये एन ड्रा कर दी. ठीक है, अभी आप देखें, ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 10. सो मैंने ये फोर्स ड्रा कर दिया है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल भी शो कर दिया 10 डिग्री से. सही है? ओके सर. यस सर. अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए Fn चाहिए, Ft मेरे पास है, और F चाहिए. तो यहां पे देख लें, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इस F का कोई एंगल N के साथ या T के साथ मौजूद है? निकाल सकते हैं सर. कैसे निकालेंगे जी? इस फोर्स का T के साथ, T एक्सिस के साथ या N के साथ कोई एंगल है यहाँ पे? यस सर. कंपोनेंट क्या एंगल है सर 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150, और फिर 10 माइनस करेंगे भाई तो क्यों जरूरत क्या है? ये सामने फ्री बॉडी डायग्राम किस लिए? 10 ये है, 30 ये, तो टोटल 40 हो गया ना. क्यों कॉम्प्लिकेशन है? पर तो वही 180 माइनस 40 140 ही आता है. वही मैं कह रहा हूँ ना कि इतनी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत क्या है? ये देखिए, ये दिस इज 10 एंड दिस इज 30. सो एंगल ऑफ F विद, ये माइक बंद कर, एंगल ऑफ F विद T एक्सिस, इट इज बेसिकली 40 डिग्री. सो दिस मीन्स अगर मैं इसका T कंपोनेंट निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर होगा? F cos 40, राइट? यस सर. और N कंपोनेंट क्या होगा? इट्स sin 40 होगा सर. माइनस F sin sin 40. माइनस F sin 40. तो ये मैंने यहाँ डायग्राम पे शो भी कर. सो Ft इज इक्वल टू F cos 40. T तो मेरे पास है Ft, कितना है? 75. तो वो मैंने पुट कर दिया उसमें, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, उसकी वैल्यू ये आ गई. Fn किस चीज के बराबर है? F sin 40 के. ठीक है, Fp मेरे पास है, ठीक है, sin 40 भी है, तो यहाँ से मेरे पास Fn भी आ जाएगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हार्डली आपके 2-3 मिनट लगेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको करें, प्रॉपर डायग्राम आप ड्रा कर दें. सो प्रॉपर डायग्राम ड्रा करना, ठीक है, खासकर यहाँ पे ऐसे केसेस में जहाँ पे एक्स वाई आपको गिवन और आपसे कहें कि एक्सिस ए के साथ और बी के साथ इसका एंगल निकालें. आर इन केसेस वेयर यू आर हैविंग एंटी एक्सिस एंड एक्स वाई एक्सिस एंड सो मेनी अदर एक्सिस. तो बेहतर क्या है कि आप इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करके पहले प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें. देखिए, ये दो चीजें हैं यहाँ. तो अगर आप इसको समझते नहीं है, डेफिनेटली इसकी भी आपको फिर समझ नहीं आएगी. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. Okay. Now, what they are saying, determine the magnitude Fs of tensile spring force in order that the resultant Fs and F is vertical force. What Fs basically spring force.
सो ये ऑब्जेक्ट इस साइड पे जा रहा है एंड स्प्रिंग क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है उसको, ठीक है। इफ यू मूव दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन सो स्प्रिंग विल मूव इट इन दिस डायरेक्शन, सो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है और अप्लाइड फोर्स क्या है, वो इस डायरेक्शन में है। व्हाट दे वांट, दे आर सेइंग इफ यू ऐड Fs एंड F so their resultant will be in vertical direction. Determine the magnitude Fs of tensile spring force in order that the resultant Fs and F is vertical force. Determine the magnitude R of this vertical force. Okay. So you see मैंने free body diagram बना दिया है. This is Fs जो किस डायरेक्शन में है और ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ला इसके टेल्स मैंने ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और मैंने ऐसे इसको ड्रा कर दी। ये जो एंगल ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 है और जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल वर्टिकल है। तो मैं क्या करूंगा, ये फोर्स ड्रा करूंगा, ये फोर्स ड्रा करूंगा, फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है 90, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये वर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखिए फोर्स मेरे पास कितना था, फोर्स इन्होंने कहा है यहाँ पे 500 न्यूटन। तो ये 500 न्यूटन है, चूंकि ये सोल्यूशन मेरे पास जो मौजूद था वो फुट पाउंड सिस्टम का है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 500 न्यूटन लिख देना। यू नीड टू राइट 500 ओवर हियर एंड व्हाट अबाउट दिस वन, वी नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग। So now it's very much easy, like this problem is. What we need to find out, we basically need to find out this line and this line, ठीक है। So this is right angle triangle. Right angle triangle, we have this hypotenuse, we have this angle. Can we find out this base? Yes, sir. Cos x. Yes, sir. ठीक है। And can we find out this height, this vertical? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this will be, this is 500, so 500 cos of 60. This will be Fs and 500 sine of 60. This will be the resultant, right? Yes. Yes, sir. Okay. So in this equation, what you need to do over here, you need to replace this 120 by 500. So Fs 500 into cos of 60 and R is equal to 500 sine of 60, and this will be your required result. Is it clear? Yes, sir. Okay. So now you see another problem. What they are saying, the ratio of lift to drag force. एयरक्राफ्ट में हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक लिफ्ट होता है, एक ड्रैग होता है, ठीक है। लिफ्ट क्या है, लिफ्ट की मदद से एयरक्राफ्ट ऊपर को उठता है। एक वो फोर्स होता है जो हॉरिजॉन्टली उस पे फोर्स एयरक्राफ्ट के ऊपर आता है, उसको हम ड्रैग कहते हैं, ठीक है। सो लिफ्ट टू ड्रैग L/D, उसका रेशियो गिवन है, वो कितना है, वो 10 है। एंड दे आर सेइंग इफ लिफ्ट फोर्स ऑन अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ एयरफॉइल इज 200, अगर लिफ्ट फोर्स 200 है तो ड्रैग कितना हो जाएगा, ठीक है। सिंपली उसको दूसरे साइड पे कर दे, वो आपके पास 200 डिवाइड बाय 10, वो आपके पास 20 हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Compute the magnitude of resultant force R and the angle which it makes with the horizontal. So आपने क्या करना है, this is L, this is D, इसका आपने resultant निकालना। Simply draw parallelogram, parallelogram बना दें। This will be the resultant. Find the magnitude of this resultant. So it's very much easy. You have this force, you have this force. You have both of these forces. But again, the units in this case is changed, so you need to use these values, not this one, just for concept. Okay. So find out this resultant and also this angle. You have this one, you have this one. ये फोर्स आपके पास है, ये फोर्स आपके पास है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस से एंगल निकाल लें और दोनों को विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐड करके आप क्या करें, ये रिजल्टेंट भी निकाल लें। दिस इज अ वेरी मच सिंपल प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this problem, it is little bit tricky. Imagine this is like your automobile or your car clutch mechanism or brake mechanism. ब्रेक में क्या होता है, अगर आप अपनी गाड़ी के ब्रेक्स को एब्जॉर्ब कर लें, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग ड्रम ब्रेक्स, तो आप जब पेडल को प्रेस करते हैं वो फोर्स जाता है फाइनली अल्टीमेटली वो जाता है ब्रेक लेदर्स पे, और ब्रेक लेदर आपकी जो गाड़ी के जो ड्रम्स है उसके अगेंस्ट प्रेस हो जाते हैं। इसी तरह है ना? Yes, sir. एंड जब उसको छोड़ते हैं वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाते हैं।
सो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है कि ब्रेक प्रेस कर दी है, ब्रेक प्रेस है अभी, तो जो स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, मींस आपकी जो ब्रेक लेदर है वो ड्रम के साथ लगे हुए हैं, तो उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है वो स्प्रिंग क्या करता है, वो लेदर्स को वापस खींचता है ना। यस सर, पुल करता है। सो जैसे ही आप ब्रेक पैडल छोड़ते हैं वो लेदर अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। वो क्यों वापस आते हैं, किस वजह से, स्प्रिंग की वजह से आते हैं ना। यस, स्प्रिंग की वजह से। अगर स्प्रिंग ना हो तो वापस नहीं आएंगे, राइट। या जी, यस। ओके अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, इन्होंने कहा है कि द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग मॉडुलस के इज इक्वल टू 1.2 किलो न्यूटन इज 100 mm। मीन्स ये जो स्प्रिंग यहाँ पे ब्रेक लेदर में लगा, ब्रेक लेदर की मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ, ये शेप उस तरह है तो इस वजह से मैं दे रहा हूँ। ये जो स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है इसकी के की वैल्यू क्या है, कितनी है वैल्यू, 1.2 किलोमीटर पर मिनट। अच्छा, और इसकी जो अनस्ट्रेच लेंथ है, मीन जब आपने जब ब्रेक ना लगाई हुई नॉर्मल कंडीशन में जब होता है, समझ आ रही है, अनस्ट्रेच, वो लेंथ कितनी है इसकी, 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर। अच्छा, व्हेन पिन पी इज इन द पोजीशन थीटा, जब ये पिन पी इस पोजीशन में हो, मींस ये एक एंगल बना रहा हो थीटा, और ये थीटा कितना है 30 डिग्री, राइट। यस सर। अच्छा, आपने क्या करना है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच द स्प्रिंग एक्सर्ट ऑन द पिन। तो ये पिन पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा ना जब आपने पैडल प्रेस किया हो, तो ये क्या करोगे, उसको अपनी जगह पे वापस ले जाने की कोशिश, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ऐसी होगी आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, इस फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट आपने निकालना है, समझ आ रही है। यस सर। स्प्रिंग को एज अ फोर्स कंसीडर करना है। स्प्रिंग को एज अ फोर्स नहीं, स्प्रिंग में जो फोर्स है एक्चुअल फोर्स वही आपने फोर्स कंसीडर करना है, स्प्रिंग को एज अ फोर्स कंसीडर नहीं करना आपने, If is equal to 10. ओके। ठीक है। अच्छा, विच द स्प्रिंग एक्सर्ट ऑन द पिन, तो आपने वो फोर्स निकालना है वो जो स्प्रिंग इस पिन पे एक्सर्ट कर रहा है। द फोर्स इन स्प्रिंग इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू के, हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज डिफ्लेक्शन फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड लाइन। एक्स क्या चीज है, डिफ्लेक्शन फ्रॉम अनस्ट्रेच, मीन अनस्ट्रेच 100 mm है, आप जब इसको खींचेंगे तो उसमें जो चेंज इन लेंथ आएगा वो क्या होगा, वो आपके पास एक्स होगा। मीन इनिशियली आपके पास 100 mm है, अगर आप इसको खींचते वो लेंथ 120 हो जाती है, तो डिफ्लेक्शन कितनी हो जाएगी, 20। 20। ओके अच्छा, सो व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे आप देख लें, अगर इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो पॉइंट ए अगर आप देख लें ये ओरिजिन से कितना दूर है एक्स एक्सिस में, 60 और वाई एक्सिस में, वाई में 40। 40। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वो 60 40, ये देखिए ये 30 है, ये जो आपके पास है ये 80 है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। फोर्स क्या है, पॉइंट पी पे अप्लाई हो रहा है, सो दिस इज द फोर्स, ठीक है। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, अभी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जरा लिखते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए जरा देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ से आप देखते हैं ये डिस्टेंस कितना है, ये अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये 80 है, राइट। Yes, 80 है ना, यस सर। अच्छा, और ये एंगल कितना है 30। 30। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस में 80 sin 30। 80 sin 30 ये एक्स एक्सिस में हो जाएगा, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -80 cos 30 सर। 80 cos 30, ठीक है, क्योंकि एंगल इसके साथ है। सो ये देखिए मैंने इसके भी एक्स एक्सिस में इसका कितना डिस्टेंस है 80 sin 30, और वाई एक्सिस में कितना है -80 cos 30, ये मैंने लिख दिया और मैंने कैलकुलेट कर लिया। यस। सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे जरा आप देख लें, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दी ये कोऑर्डिनेट्स, अभी इसके कोऑर्डिनेट्स जो है मैंने लिख दी यहाँ पे 60 40 पॉइंट ए के, और बी के जो आ रहे वो मैंने यहाँ पे लिख दी, समझ आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो इसका मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये मैं निकाल सकता हूँ x2 - x1 से,
यस सर। अच्छा, और ये y डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, ये y डायरेक्शन में डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये पहले डिस्टेंस पिक्स को एक मिनट। ठीक है। अच्छा, 60 माइनस 40 ये तो 20 हो जाएगा ना, और 40 माइनस माइनस 69.3 ये कितना हो जाएगा? 109.3, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा, सो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया और ये भी आ गया, क्या मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ? यस सर। ये कैसे निकालेंगे? स्केल्स ले लेंगे सर दोनों का साइड से। अच्छा ठीक है, और ऐड कर देंगे। तो जी। ये जब हम इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 111, राइट? यस सर। अच्छा, तो मेरे पास ये क्या आ गया अभी इस केस में, ये लेंथ मेरे पास आ गई है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक स्प्रिंग की जो लेंथ है वो मेरे पास आ गई है ना? यस सर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी? 100 mm। 100 mm। ये किस कंडीशन में 100 mm थी? रिलैक्स अभी मेरे पास कितनी आई है? 111 111। ये क्यों? 100 mm 11 हो गया सर। स्टेरिंग को प्रेस क्योंकि हाँ, तो कितनी डिफ्लेक्शन कितनी है? 11 11। वेरी गुड। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो 11 है, और k की वैल्यू कितनी है? 1.2। क्या मैं ये फोर्स निकाल सकता हूँ अभी F = k x से? बिल्कुल सर, निकल। यस ठीक है, तो ये मैंने वो फोर्स निकाल दिया, ठीक है। F = k x, स्ट्रेच लेंथ माइनस अनस्ट्रेच लेंथ। स्ट्रेच लेंथ कितनी? 111। अनस्ट्रेच लेंथ कितनी है? 100। ठीक है, so from here I have find out the okay, but ये वैल्यू किस चीज में है? किलो न्यूटन में तो 1000 mm में। तो mm को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। तो मैंने 1000 पे डिवाइड कर दिया, तो फोर्स कितना आ गया? 13.34 13.3। अच्छा, अभी ये देखें, ये फोर्स मेरे पास आ गया ना? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर इस फोर्स का किसी तरीके से मुझे ये एंगल मिल जाए विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, तो मैं इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल सकता हूँ? यस सर। अच्छा, तो एंगल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ? जी सर। निकाल सकता हूँ या नहीं? अच्छा, कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर बेस गिवन है सर। हाइपोटेन्यूज 109.3 डिवाइड बाय 20, ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा हो जाएगा। यहाँ से थीटा आपके पास आ जाएगा जो कि 79.6 आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर। अच्छा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ कॉज ऑफ थीटा। एफ वाई क्या हो जाएगा? एफ साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? और देखें, एफ एक्स पॉजिटिव होगा, एफ वाई भी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एफ की, तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, इस डायग्राम में असल में आपने क्या करना है, बस आपने ये डिस्टेंसेस वगैरह निकालनी है, और सिर्फ एक जो कंसेप्चुअल चीज इसमें ये थी, F = kx। ठीक है, आप सोचते नहीं है प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से, अगर पढ़ते नहीं है तो आप x की बजाय डायरेक्ट 100 पुट कर देंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार बताया गया है कि x इज बेसिकली डिफ्लेक्शन। ओके, so now what you need to do, you need to cover all problems from 1 to 27, that is chapter 2 problem 1 to 27. You need to cover all those problems. Today we actually started chapter 2 for this topic, means for 2D force system. What you need to do, you need to do problems from 1 to 27. उसमें से जितने मैंने कर लिए हैं, ठीक है, वो हो गए। Remaining is your home task, so you can do it by yourself. If you are having any question, you can ask. ये this is the lecture number 3rd. सर क्वेश्चन है कोई? सर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं जी, समझ नहीं है, दोबारा पूछ। सर, ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, थोड़े
तेज बोले थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम क्या क्या ये करें। सर प्रॉब्लम ज्यादा है, ये कह रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो खैर है ये, क्योंकि ज्यादा। अब तो जरा मैं बुक बता दें, बुक जरा खोल लें, उसमें देख लें प्रॉब्लम्स कितने हैं। ये तो है सर। ठीक है, देखें इट्स अप टू यू। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम ना करें सो इट डजंट मैटर, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन समझ विदाउट प्रैक्टिस आ नहीं सकती आपको। सही है what सर। you need to do, you need to do at least 2 or 3 problems on of same type। जब आप बार बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें देख लें यूजुअली हम कितने प्रॉब्लम्स करवाते हैं, एक आध करवा लेते हैं आपको। आज मैंने कितने करवाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो मैंने करवा दिया यार इसमें से। ठीक है सर, कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ ही। ओके, क्वेश्चन कोई है तो कर लें। नहीं है सर। नो क्वेश्चन सर। सर ये गूगल क्लास